namaste and welcome back 2025 and I'm shooting another video. This is very last minute. तो मैं हर साल क्रिसमस के टाइम पे प्लम केक बनाती हूँ. अभी क्रिसमस तो हो चुका है. टुडे इज़ 27 दिसंबर. बट वो एक रिचुअल बन गया है जो मैं हर साल बनाती हूँ करके. इवन दो वी डोंट सेलिब्रेट क्रिसमस बट इट्स फन मेकिंग अ प्लम केक. सो आज मैं प्लम केक बनाने वाली हूँ विथ माई ब्रदर. ही इज़ गोइंग टू हेल्प मी एंड मोस्ट ऑफ द पार्ट वही करने वाला है. मैं आज नेम सेक के लिए it's like he is making the cake but I am a helping hand for him. So let's make plum cake. तो हम केक बनाने स्टार्ट कर रहे हैं एंड दिस इज़ द फर्स्ट सेट ऑफ इंग्रेडिएंट्स. This is orange juice, this is lemon juice, we have black raisin, golden raisins, cranberries, orange peels and orange zest. Orange zest तो बाद में लगेगा. तो यूजुअली क्रिसमस का जो केक प्लम केक बनता है वो विथ रम होता है एंड सारे जो फ्रूट्स होते हैं ड्राई फ्रूट्स एंड जो नट्स होते हैं वो सब सोक किए जाते हैं एंड ये प्रोसेस महीनों पहले से शुरुआत होती है. तो मैं पहले बात तो विदाउट रम बना रही हूँ एंड आई एम नॉट गोइंग टू सोक इट फॉर अ लॉन्गर टाइम क्योंकि बहुत लास्ट मिनट है. तो मैं उसको सोक नहीं कर रही हूँ, मैं उसको कुक करूँगी सो दैट इट हैज़ दैट प्रॉपर फ्लेवर. तो ये आराध्य करने वाला है अभी. And meanwhile, I'll be preparing the dry ingredients for the cake. So this is our dry ingredients. I have added maida. We have cinnamon powder. We have little bit of black pepper powder in it. Baking soda and baking powder. And this is orange zest that I am adding. And here our dry ingredients are all ready. Give it a good mix. And then let's jump on to the wet ingredients. Meanwhile, Already prepared the dry ingredients. Here we have almonds, cashews and a few seeds, that is sunflower and pumpkin seeds. And अभी इसमें मैं wet ingredients prep करने वाली हूँ. For that we are using ghee, dahi and we need castor sugar for that. Now we are adding our dry ingredients to the flour and I am going to mix it till we find no lumps in our cake batter. The batter looks really amazing. So we are done. अभी पूरा mix करके it is going to get baked in the microwave. Batter is ready and so are our tins ready. मैंने थोड़ा सा cinnamon dust किया है नीचे से. I'm topping it with the nuts and some seeds and we'll also be adding the dried fruit mixture that we've made for the better taste. moments later.
हे कौन करायला बोलले? Guys, the cake is ready. Just look at it. It looks perfectly baked. And अभी टेस्ट करके देखेंगे कैसे बना है. Merry Christmas, everyone, and a New Year's Eve. It looks so very good. I'm having the first bite. It's good. It's less sweet. लेकिन मेरे घर पे वैसे ही खाते हैं तो एंड बहुत गरम गरम है तो इट्स टेस्टिंग रियली गुड. और गाइस ये दूसरा वाला है जो केक जैसे नहीं दिख रहा है. इट इज़ वेरी फ्लैट बट आई मीन सेम ही बना है. दिस लुक्स मोर लाइक इसमें ज़्यादा अच्छे से ब्राउनिंग हुई है कंपेयर टू दिस वन. एंड आई एम प्रीटी श्योर ये केक आज के आज ही सब खाने वाले हैं, ख़त्म कर देंगे. So I'm going to be posting this video on 31st, that is the New Year's Eve. So it would be a final goodbye to 2025. So I am wishing a happy new year to each one of you. Have a very great year ahead. And as I've decided, I'm going to stay consistent and post a lot of vlogs in 2026. So be ready for that. Stay tuned and keep smiling.